slash A9 capital T small I T. So two reasons, people. So till yesterday, we tried writing our own code for a particular method or a particular library, right? We wrote our own code for matrix factorization. Okay, I will sit because so this the camera doesn't like me when I stand. Now there's this only so much we can do in writing our own code. We can go about and write code for every particular neural network which is there, or at least one of them. But it will be time consuming. And this is where Python is cool in providing us a number of libraries to use. So today onwards, we'll start using the inherent learning libraries of Python. Okay. So in the first hour or so, I will tell you the problem why we started looking at from a semiconductor engineering point of view. So a business problem. Then in the second hour, we'll run through the kind of classifiers we can try with, the first order classifiers. We'll look at random forest, we will look at gradient histogram boost, we'll look at simple decision tree. Okay. Then after lunch, hopefully after lunch, we'll start coding this thing. And if we get time, we will show you the result of our study which we did previously on this problem. Okay. So today the coding part will be relatively easy. The reason we have given you that link is there's a folder called slides there now, where I have placed all the slides, including today's slides. So you will need today's slide for going back and forth, because I'm not going to give you any code today. So you're writing the entire code from scratch today. Okay. The second thing is, in your sugar folder, you will see a large number of other databases which are there. And if we get time, so we'll start by looking at the semiconductor yield database. But those who complete it quicker will also look at agricultural databases, things like crop prediction and crop recommendation databases, to see if we can do any of that. Okay? So, first hour is going to be very electronics. Computer science people who hate going to electronics lectures in our first year or even in second and till which year do computer science people learn basic electronics circuits and other things? Second year also you're running digital electronics, right? And then you have to do microprocessors at some point of time. Good. So you know some of it. So the paper to read for today would be a short paper. It's just a 4-page long paper. It's written by Rebecca Bush, one of my PhD students. And what we looked here was, can we use machine learning and parameter optimization to predict yield in semiconductor production? Now, before we delve into the machine learning part, somebody still wants to teach from another room. So there are professors like me who are lazy teachers, who can continue. There are professors who really want to force you. This is my favorite topic and you have to learn this topic. So, before we understand why yield is important, so you might have seen single chips in your laboratories, or haven't. How many of you have opened a computer? No? One person? What about bachelor students? You have never opened a computer inside? So are you all in engineering colleges or typical universities where you also have humanities departments? You also have humanities department, right? So I don't know if I can say this publicly. My standard advice for engineering students used to be, don't open your machine in case you make it go bad.
Make friendship with somebody from humanities who has no idea about computers but has bought the fanciest computer in the world. Right? 2 days later, they will know something is not working. And that's the time to apna haath saaf karne ka. Laptops, I will advise not, but desktops, you should certainly open and peek around what's going on. Actually, you know what? Can one of the master students help me? If these guys have never seen inside a computer, can we try to get, in that machine, in that high voltage room, there are many old computers. For an old computer which nobody uses. Okay, I'll talk to Dr. Mukherjee if we can lay our hand on an old machine, which they will be happy to give to me so that I don't break it. But any machine, we'll open it and see what's inside. Right? My standard advice earlier used to be become a better half of somebody from humanities department. Then they will trust your machine and phone to you. If you can fix it, the relationship continues. If you can't fix it, it goes down. But hey, it's humanities department. You can take some risk with them. It's vital for a computer scientist to know what's charging our power, what's powering the entire activity. Okay. So if you open inside of a computer, you will see a number of chips all doing different things. One of the big ones will be a microprocessor. There might be solid state drives. There might be voltage controllers, and so on and so forth. And I think we will open a machine today. If nothing else, I'll be opening this machine. So if you can't find a machine to me, we are opening the office computer here. It's a Dell machine, so I'm sure I have opened enough of them to show it's not going to stop working. The way these chips are manufactured, they're generally made on a wafer, which is a semiconductor base. And we have large number of chips manufactured on the same wafer. Okay? But as luck goes, not all of the chips are going to be functional. How many of you have made roti? 2%. You guys will be dead if you go anywhere. Okay, so the master students have learned to make it. You never make the rotis of the same dimension, even if you have been too experienced. Our mothers will disagree to the fact, meri sari rotiyan perfect hoti hai. But coming back to wafers, because we have a large number of chips, some of these may or may not work. Now, for a production company, the ones who don't work are pure loss, because making of a chip process takes a lot of time, energy, and cost. So, say we have a wafer. It's a circular wafer, and each one of these are individual chips. And we have 60% yield. That means 40% of my chips are going down the drain. Now, for the next hour, we will see why these things can happen, to give you a complexity of the problem as to why it's difficult to predict what's going to happen. Why we cannot look just at process parameters and say कि अगर temperature ज़्यादा हो गया था या pressure ज़्यादा हो गया था इसलिए चीज़ें खराब हो गई. Okay. Now the process yield of foundries is a very closely guarded secret. So I worked with 2 foundries, and if I tell you today that, they will kill me. So no foundry ever tells to the white world what is my process yield, what percentage of my chips will work. A good foundry in this high scale process will aim for something like 90-95%. But depending upon the device and the customer you have, it could be even lower. If it's a new foundry, the yield will be lower. The yield improves over a period of time because we know what makes the things click. And this is one of those dark arts of fabrication as to what is the exact sweet spot of various temperature pressure profiles which leads to a good device working. Of course, there are equations, but real world has got equations and lots of other factors. And there might be a tiny little movement in the building, tiny change in air conditioning, tiny change in liquid nitrogen supply, or a bit of dust particles, which could make our life very miserable.
I was talking to you about the size of transistor the other day. So let's ask this question. This is again a fundamental question. So because these transistors are very tiny, we can't afford for dust particles too, because dust particles are also small, right? So we make these transistors in something called clean rooms. And this is the place where we wear our spacesuit uniform to go inside, okay? And the clean rooms are classified based on number of dust particles per cubic centimeter allowed. Because we can't get zero. Zero is almost space, and we're not making it in space. So if a cubic centimeter of air has 1,000 dust particles, we call it a class 1000 clean room. We have class 100 clean rooms, and for very advanced processes, let's say less than 65 nanometer, we also have class 10 clean room. So you allow 10 dust particles per cubic centimeter. Now, there's one more clean room which some of you might have seen. If you have not seen a semiconductor fabrication clean room, you have seen an operation theater. At least हिंदी ड्रामा देखे होगे तो कोई ना कोई आदमी ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट करता जरूर मिलता है, ठीक है? वो भी एक क्लीन रूम है, काफी साफ रखते हैं. Do you know how many dust particles are allowed in operation theater? So I'm just comparing our clean room to that clean room. About 10,000, 10 to 100,000. Generally 100,000 is good. So a place where we build human beings, we take less care than where we make our chips. So my clean room are sacrosanct. Nothing goes in. Even I will not go in without changing myself completely. Okay. Though we must confess, we have been once in the clean room without covering our face because was in photo lena tha to go into the display. And all of us wearing face masks and covering ourselves, well, doesn't look very good on photographs. Though that's a different story. The lab engineer had a fit looking mask hata diya. See, my apologies. Now, so one question is, dust particles can destroy my transistor performance. If they fall on any one of the layers, I'm done for. So we generally use liquid nitrogen for cooling, and we use a lot of significant resources to clean the room. I mean, right now this room is fairly clean, but we are looking at around 1 million dust particles per cubic centimeter in this room. Okay, and compared to what we have outside, it's perfectly fine. Oh boy. My font sizes have gone completely bonkers going from Mac to this, but I guess it's still readable. Okay. So what we will do is, for first half an hour, we will see how is a chip made. Now, all of you know the very fundamental unit of electronics, the inverter. Basically, you give 1, you get 0, you get 0, you get 1. It's as simple as that. Okay. And that is the circuit counterpart of an inverter in a MOSFET process. We have an NMOS type transistor, we have a PMOS type transistor. They are put in series. You have to provide input at their gates and you take output at the drain. And we have power supply on top, ground on bottom. Something as simple as that. Okay? That's how is the vertical cross-section of a physically made inverter looks like. Most processes these days are a P-substrate process. So we take a semiconductor, mostly silicon, but there are people who also make it from gallium arsenide or silicon germanium process and others, but mostly silicon. And typically we start with a P-type substrate. So, and here we make an N-well to make the PMOS transistor, because PMOS transistor has got different characteristics. And then we will have diffusion. So that's our transistor here. 2 N-type diffusion, a gate contact, and a substrate contact. Something to connect to substrate, something to connect to the gate, and 2 diffusion. And the PMOS transistor is now sitting in an N-well, and you have metal connections. The blue lines are your metal, which are connecting between this terminal and this terminal here. Okay, so that's a single transistor. Remember, in a normal high-end processor, we are now looking at about
a billion to 10 billion of these devices. Okay. So now go across saying what it goes in making one inverter, for you to give an idea what goes when we are making a billion of these in parallel, how many things can go wrong. Okay. So a bit of drill, we are going to do a bit of material sciences. The beauty of what I used to say, that the beauty of being an electronics engineer is I need to know one element in the periodic table, which was silicon. And I know everything about silicon, but I have no idea about anything else. The beauty of computer scientist was to say, periodic table वो कौन सी बला है? कोई classification करना है क्या उसमें? So, this is what we need cursory. We need a P-type substrate. उसको बनाने के लिए some sort of intrinsic semiconductor चाहिए और कुछ dopant diffuse करने होंगे. ये generally बना बनाया आता है. When we start a cleaner process, P-type substrate बना बनाया आता है. We don't physically try to make them. इसमें हम लोग N-well बनाएंगे, which means कुछ diffusion या ion implantation करना होगा donors के साथ, right? So पहला generally नीचे से बनना शुरू होता है, right? So you start with a substrate and you start making from top bottom. इसमें फिर source और diffusion बनाएंगे, N-type source और P-type sources. और इनकी डोपिंग ज्यादा होती है. Please remember the P-type substrate here, the dopant of P plus will be heavily diffused, and that's why it's written as P plus. Similarly, your N-type diffusion here will be more diffused than N-well. So ऐसा नहीं है कि same process repeat कर सकते हैं. उसके बाद थोड़ा एक dielectric लगाना होगा to form the gate. You can see the small dielectric which is just covering the gate. और जब हमने गेट लगा दिया, then we need a thick oxide, a silicon dioxide, to separate structures. Remember, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट होगा तो हमारा पूरा का पूरा चिप गया. So good dielectric लगाना होगा दो वायर्स के बीच में शॉर्ट करने के लिए. उसके बाद हम गेट बनाएंगे. गेट तो हमने बना दिया, गेट को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी देना हो. Now this is a very fun thing. So आप लोग जनरली वर्ड सुने होंगे MOSFET, like metal oxide semiconductor field effect transistor. मेटल यूज नहीं होता टू मेक द गेट. इट्स एन ओल्ड नोमेनक्लेचर जो चला आ रहा है, तो बस कौन बदलने जाए. वी नाउ यूज पॉलीसिलिकन. ओके, तो मेटल की जगह हम लोग पॉलीसिलिकन इस गेट कॉन्टैक्ट में लगाएंगे. बट बाकी सब चीज को कॉन्टैक्ट करने के लिए मेटल यूज होता है. हिस्टोरिकली हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते थे, अब हम लोग कॉपर यूज करते हैं स्मॉलर ज्योमेट्री प्रोसेसेस में. ठीक है. The other materials, the other better conductors are gold and silver. Gold बड़ा बुरा conductor है, diffuse करता है silicon में. But we do use gold for electrical contacts to the chips when they are made. And this is the mistake which I did when I got married. My mother said कि शादी हो रही है, कुछ gold का gift लेते आना wife को देने के लिए. लास्ट डे था, भूल गए थे, तो I just took a chipset. Pure gold है, so contacts तो gold है ही. Right? My wife still hasn't figured out किसका करना क्या है. And as an electronics engineer, I often am really annoyed at gold shops. I mean, I know people do use gold jewelry. They increase the gold prices. हमें gold चाहिए to make the contacts. वो महंगा होते जाता है हर साल, क्योंकि लोग गहने खरीद रहे हैं. और गहने खरीद के you're not doing anything, right? So this is one of those things where you're just transforming a physical material into another shape, and you just keep the shape. The shape is not going to do anything. I mean, होता है कि आपने बॉडी पर लगा रखा है और आपके बॉडी का टेम्परेचर नाप रहा है, right? Or telling you कि कौन सी डिजीज हो रही है, perfectly fine by me. I mean, there has been some ideas, and we have been looking on that to embed sensors on your jewelry. But otherwise it does nothing, right? कपड़े पहन रहे हो तो कम से कम कोल्ड से बचा रहा है. But this is just wastage of natural resources. Okay, I know it's a currency. People use gold thing as a currency. But anyway, so this was a side view of a transistor, of an inverter. Vertical cross section मारते हैं चिप का. अगर ऊपर से देखें हम, तो something like this दिखेगा. Okay. We have got ground contacts and we have got these
my contact for the gate, 2 type of transistor, N type of transistor, P type of transistor, and you can see the well around P type transistor, and then the contact for electric. So the blue lines are metal. The hatched, is it orange or pink? This line, that's polysilicon. The green is an N-type diffusion. Brownish orange is the yellow P-type. I'm fairly color. Color classification is a difficult job for me. And you can see, so I've got red, and everything else is pretty much the same color for me. Okay? So that's what the chip designer gives to the foundry. ये वाला मुझे बनाना है, आप हमें बना के दीजिए. Okay. So if you ever go to a chip design studio, you will see a number of layout engineers literally painting on their screen. यहाँ पर ये transistor है, इससे ये contact हो रहा है. ठीक है, आप automated process भी use करते हैं, but analog design engineers still do color painting. Okay. So this, I think once my 4-year-old son visited my lab and I took him around seeing कि मेरे students क्या करना है, and of course they were doing layout. And घर जाके मम्मी ने पूछा क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते हैं मम्मी, जो मैं स्कूल में करता हूँ ना क्रेयॉन से पेंटिंग, वो कंप्यूटर पे पेंटिंग कर रहे थे. And we do some things like that. So now each one of these layers जो हमने draw किए हैं, उनको separately बनाते हैं and they become a different mask. So first thing you do in a layout is separate it into different layers जो हम बनाने वाले हैं. So as you can see, if I break down the layers, each one of them becomes different. So you have an N-well, ये कहाँ N-well बनेगा, polysilicon, diffusion, N plus diffusion, P plus diffusion, the contact cuts कहाँ contact करेंगे, and then metal points. Guys, for all electronics and computer science engineers, fabrication can become very, very boring very, very quickly. इसलिए हम लोग हर चिप डिजाइन का पहला लेक्चर यही करते हैं. अगर ये सरवाइव कर गए तो बाकी सब एग्जिस्ट कर जाओगे. बट आप लोग को हम इसलिए कर रहे हैं so to get an appreciation of how things can go wrong and where are many places where things can't go wrong. Okay. Other buzzwords to know. एक फीचर साइज होता है. हर फाउंड्री का एक जो स्केल होता है उसमें एक फीचर साइज नंबर कहा जाता है. Say 0.35 micron process, which means the smallest, well, originally it used to mean smallest dimension transistor. It no more means smallest dimension transistor. It means the smallest feature which you can make in the process. So the smallest feature you can make is 350 nanometer or a 22 nanometer or a 5 nanometer. And smaller is the feature size, more is the transistor I can put in this. Okay. तो ज़्यादा ट्रांजिस्टर बनाना या तो हम अपना चिप बड़ा बनाएं या फिर चिप सेम साइज का रखें and small transistor घटाएं. Smaller is the transistor, it also generally means it will deal with smaller voltage और उसकी पावर और लो पावर होगा. पावर घटेगा, frequency of operation बढ़ेगा. Okay. The other thing which is tangible is the wafer size. कि हमारा जो standard wafer है, जो round wafer है, कितना बड़ा है. ये एक wafer में हम कितने chips बना सकते हैं. Historically 6 inch या 8 inch wafer use किया जाता था, 150 millimeter या 200 millimeter. Yes, 8 inch does not mean 200 millimeter exactly, but exact division करने लगे तो दिक्कत होगी. आजकल 300 millimeter wafer is the standard, and there is a move to 400 millimeter. Okay. To give you an idea कि एक wafer कितना बड़ा है, अगर हम 300 millimeter wafer ले रहे हैं, 122 nanometer, आज से करीब 5 साल या 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी प्रोसेस, अभी भी fairly quite a lot use होती है. We are forming 10 to the power 12 transistors. आज हम लोग 2 ट्रांजिस्टर बनाने की चीज़ देखेंगे, एक NMOS और एक PMOS. So generally we are putting 10 to the power 12 transistors. Generally speaking, किसी एक चिप में इतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ती. तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेफर पर कई चिप्स बनाते हैं, बाद में उस वेफर को डाइस करते हैं, काटते हैं और ईच चिप को सेपरेटली पैकेज करते हैं. There are applications जहां हमें बड़ा चिप बनाने की जरूरत पड़ती है. When you think of a place where I will need a big chip, इतना बड़ा कैमरा कहाँ देखा है भाई? 300 millimeters diameter is quite
big, 8 inch. So think of 8 inch is almost this big. That's the radius, right? And 12 inches, well, a little bit bigger. So मेरे वर्ल्ड में कैमरा वर्ल्ड में होता है, बट इट्स नॉट द स्टैंडर्ड कैमरा जो आप यूज करते हैं. कभी खासकर अगर डिजिटल एक्सरे देखा हो आपने, ह्यूमन बॉडी साइज एक्सरे, तो एक्सरे के साथ ऑप्टिक्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है. तो जनरली एक्सरे को हम लोग डायरेक्टली एक्साइट कर. सो नॉर्मल कैमरा में आपने लेंस लगा दिया, फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है, छोटे कैमरा पर आप लेंस लगा के कर सकते हैं. यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ह्यूमन बॉडी साइज है, तो आपको ह्यूमन बॉडी साइज ये बनाना, और वो भी एक चिप में नहीं बनेगा. तो जनरली वी मेक वन चिप ऑन ए वेफर, और कई सारे वेफर्स को टाइल करके एक ये बनाते हैं. But most processing and memory will generally lead to a large number of chips per wafer. और ये जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चिप बनाना बड़ा महंगे का काम है. We're looking at least $1 billion or $10 billion investment just to start. तो हमें पहले चिप के लिए इतना खर्च पड़ेगा. एडवांटेज यह है कि पहला चिप बनाइए या 100 million चिप बनाइए, कॉस्ट रिमेन्स द सेम. सो कॉस्ट पर चिप गोज डाउन. Okay, good. So wafer का thickness generally fixed होता है diameter के साथ. So a 300 millimeter wafer will be about 775 micron thick. So 7 hair size thick अपने ये लेते हैं. The other beauty of the process is कि जो एक layer है, अगर मान लीजिए हम metal layer deposit कर रहे हैं, तो सारे 10 to the power 12 transistors का metal layer एक साथ deposit करेंगे. अगर डिफ्यूजन कर रहे हैं तो सारे ट्रांजिस्टर का डिफ्यूजन एक साथ होगा, मेरे चिप का, मेरे बगल वाले चिप का, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अदर थिंग वी जनरली डू कि एक वेफर पर हम लोग एक ही तरह के चिप बनाते हैं. जनरली देयर आर आल्सो मल्टीपल प्रोजेक्ट वेफर्स जहां पर हम डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट तरह के. दिस इज हाउ वी यूनिवर्सिटीज कैन डू चिप रिसर्च. क्योंकि हमारे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, $1 million टू स्पेंड ऑन वन PhD स्टूडेंट थीसिस थोड़ा ज्यादा महंगा होता है. Right? और उसके बाद PhD स्टूडेंट ने कोई एक मिस्टेक कर दी तो सारा का सारा पैसा पानी में गया. ना एक इंडस्ट्री में जनरली चिप्स को क्रॉस चेक करने के लिए काफी लोग होते हैं, और जब हम ट्रेन कर रहे हैं अपने लोगों को तो फिर एक ही स्टूडेंट डिजाइन से लेआउट सब कुछ करते हैं. okay? तो इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट वेफर्स होते हैं, हर लोग को अपना अपना कॉर्नर मिलता है जहां मेरे 20 चिप बनेंगे, 20 चिप किसी और यूनिवर्सिटी के, किसी और कंपनी के, एंड सो फोर्थ. इट ऑल्सो यूज फॉर अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करनी है कि कैसे चलेगा या नहीं चलेगा तब के लिए. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. और अगर अभी तक बोरिंग हो रहा था तो अगला आधा घंटा और सुलाएगा आपको, जो कि जनरली इट्स क्लासिक्स होने वाला लेक्चर. सो माय अपॉलॉजीज इन एडवांस, बट यू डू नीड टू अप्रिशिएट where things can go wrong. तो पहला काम हमें ये करना है कि हम P टाइप सबस्ट्रेट से शुरू कर रहे हैं, और इसके पहले हम कुछ बनाएंगे. हम उन एरियाज जिनमें नहीं बनाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो पूरा सबस्ट्रेट ले लिया, यहां पर ट्रांजिस्टर बनेगा, बट बाकी जगह तो कुछ नहीं बनेगा ना, तो उसको शील्ड करना है हमें. तो शील्ड करने के लिए हम we start with we put a protective layer, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर जनरली लगाते हैं. इसका एडवांटेज है सिलिकॉन और टॉप सरफेस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो ऑक्सीडाइज करने के लिए पहला काम करते हैं कि हम एक फर्नेस में 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, वेफर को गर्म किया हमने. ओके, और उसके बाद आइदर यूजिंग ऑक्सीजन या वाटर वेफर टॉप लेयर को ऑक्सीडाइज करते हैं. टेम्परेचर बढ़ा हो, ये हो, वन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. H2O के साथ ऑक्सीडेशन जल्दी होती है, बट देन आपको हाइड्रोजन बचा हुआ उसको निकालने का एक प्रॉब्लम होता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेम्परेचर पता नहीं है कि एग्जैक्ट 900 रहा होगा. यस, और ईच पॉइंट पर हम तो पूरे वेफर को हीट कर रहे हैं ना, एक फर्नेस में डाला है हमने. ईच पॉइंट पर क्या टेम्परेचर गया है वेफर का, थोड़ा डिफरेंट आ सकता है. ओके, कल हम लोगों ने मिसमैच की बात की, एक चिप पर 2 ट्रांजिस्टर सेम नहीं होते, इसलिए भी सेम नहीं होते कि दोनों को एक ही प्रोसेस नहीं मिला है. सो हमने ऑक्सीडाइज कर दिया. अब हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां
चिप्स इस प्रोसेस पर अगर हम 100 चिप्स बनाएंगे तो क्या 99 उसमें से काम करेंगे? एंड इट्स एक्चुअली, काम करना इज अ वेरी स्ट्रेंज वर्ड. Are they going to be within my specification? And a very simple specification is the clock speed. अगर हम प्रोसेसर बना रहे हैं और 3 GHz क्लॉक हमें देना है, तो will they work at 3 GHz or will they work at 2.6 GHz? तो दो काम हम ये कर सकते हैं कि जो हमने 3 GHz बनाया, जो 3 GHz नहीं दिया उन सबको फेंक दें, या फिर ये कर सकते हैं कि अगर उसमें से कुछ 2.6 GHz बने तो उनको थोड़े सस्ते में बेचें मार्केट में. जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है कि थोड़ी पुअर यील्ड वाली चीजों को हम एंड दैट्स व्हाई यू ऑफन हैव चिप्स ऑफ डिफरेंट क्लॉक स्पीड एंड स्लाइटली डिफरेंट परफॉर्मेंस. तो यील्ड को हम जितना हाई होना चाहते हैं, नंबर ऑफ चिप्स ऑन ए वेफर सेम, अगर यील्ड हाई है तो ज्यादा चिप्स काम करते हुए दिखेंगे. तो दो प्रॉब्लम आता है हमारे साथ. एक तो है कि हमें यील्ड प्रेडिक्ट करना है, इतने सारे सेंसर डेटा हुए, इससे क्या यील्ड होने वाला. दैट वे वी डोंट हैव टू गो एंड टेस्ट ईच चिप. दूसरा ये है, कैन वी डू द रिवर्स प्रोसेस, कि हमारा यील्ड इस कारण से खराब हो रहा है, इस पर्टिकुलर सेंसर डेटा के कारण खराब हुआ, तो उस प्रोसेस को जाके टेम्परेचर आप मॉडिफाई कीजिए. हम लोग कई 100 स्टेप्स के साथ जा रहे हैं, तो अगर ये वाला काम कर सके, दैट हेल्प्स ए फाउंड्री. द अदर थिंग याद रखिए कि डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे नहीं पता है. वी आर काइंड ऑफ गेसिंग. तो जितने प्रोसेस हम मेजर कर रहे थे, वी आर नॉट मेजरिंग द डिवाइस, वी आर मेजरिंग द एनवायरनमेंट इन विच द डिवाइस इज बीइंग मेड. तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विल समहाउ बी रिलेटेड टू द डिवाइस परफॉर्मेंस. एग्जैक्ट कोरिलेशन क्या है वो नहीं पता है, और एक्चुअल यील्ड जानने के लिए फिर हमें ईच डिवाइस टेस्ट करना होगा. वो बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. जो हमने सेंसर डेटा कलेक्ट किया है, कैन दैट प्रेडिक्ट द यील्ड? एंड नाउ हियर आर टू क्वेश्चंस. एक है, कैन इट प्रेडिक्ट द एक्चुअल यील्ड? कितने 99% है, 80% है, 60% मेरे काम करने वाले हैं. That's the harder question. The simpler question which we could ask, कि अगर हमें एक थ्रेशोल्ड लगा दिया है, 90% से नीचे काम करने वाले जो भी चिप वेफर होगा उनको टेस्ट करने को, और तो उसके बाद भी डाइसिंग करनी है ना, काटना है, पैकेजिंग करनी है, हम नहीं करने वाले. इट्स यूजलेस, इट इज गोइंग टू कॉस्ट टू मच. तो अगर वो भी हमें बता दे कि क्लासिफाई कर दे कि ये अच्छा वेफर है, ये बुरा वेफर है, और अच्छा और बुरा का हम एक आर्बिट्ररी लेवल बना दें, इसके ऊपर सब कुछ अच्छा है, अगर मैं 100 में से 90 चिप काम किए तो हमारे अच्छे, या फिर हम वेफर ये भी कर सकते हैं 100 में से 95 चिप काम किए तो हमारा वेफर अच्छा, नहीं तो हमारा वेफर खराब. तो इट लीड्स टू अ फेयरली सिंपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. सो दो बेनिफिट है, एक तो टेस्टिंग अवॉइड करेंगे, बट दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये रिस्क करते हैं, अगर हम जितनी जल्दी हम बता सके कि ये वाला वेफर खराब होने वाला है, उतना जल्दी हम प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग रोक पाएंगे, तो कुछ पैसे बचा लेंगे. सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ यील्ड इज द रिग्रेशन प्रॉब्लम. अगर हमें बताना है कि एग्जैक्टली हमने इतने डेटा सेट है, हमारा ह्यूज डेटा सेट है, और इससे हमें एग्जैक्ट यील्ड बताना, इतने परसेंटेज आ रहा है, तो दैट्स अ लिटिल बिट हार्ड. दो कारण से हार्ड होता है. एक तो है कि one of the reasons why computer science has or deep learning has evolved so much recently, कि बहुत सारे open data sets हैं, right? MNIST है, fingerprint data sets है, number data. आप अपने नेटवर्क को जाके ट्रेन कर सकते हैं. इस फील्ड में कोई open data set नहीं है. So each company is having their own data set, और कोई हमारे data set पर काम नहीं कर सकता. यहां तक कि हमने भी जो पेपर लिखा है इस ऑन ए डेटा ऑफ ए पार्टनर कंपनी, उस डेटा को हम रिलीज नहीं कर सकते. तो उस कंपनी के इंजीनियर्स को छोड़ के और किसी को एक्सेस नहीं है, और हर कंपनी का अपना अपना डेटा सेट है. तो ऐसा हमारे पास कोई पब्लिक डेटा सेट जहां पर बहुत लोग मॉडल को वेरीफाई कर सके और कह सके कि ये वाला मॉडल सबसे अच्छा है, इसको ट्राई कीजिए. और जो हर कंपनी का डेटा सेट है, वो उन्होंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किए थे बिफोर इवन
डीप लर्निंग बिकेम ए फैशनेबल थिंग, क्योंकि चिप तो हम कई सालों से बना रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा पास डेटा है, बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बस डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है. तो हाउ डू वी प्रोसेस दिस इज चैलेंज. द अदर प्रॉब्लम, गुड और बैड यील्ड, इज अ लिटिल बिट मोर स्टडीड, क्योंकि हमें सिर्फ 0 और 1 काइंड ऑफ आउटपुट चाहिए, वेफर ठीक या वेफर खराब. That's also the slightly easier problem, because हमारा नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, हमें एग्जैक्ट एक नंबर नहीं चाहिए, हमें एक बाइनरी टाइप ऑफ क्लासिफायर चाहिए. Good. So that is all I'm going to teach you about fabrication and the problem, why yield is a problem and why we worked on yield. Okay. Depending upon whether the tea is ready and whether we have to take a break, we can continue to learn what are the algorithms which will be useful in predicting that yield. आज हम लोग algorithms का mathematical foundation नहीं करेंगे. आपने अभी तक देख लिया होगा कि मैं बहुत मैथ्स पढ़ाने के इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मेरे पिताश्री मैथमेटिशियन थे, तो वो वाला जीन मेरे फादर के साथ अटक गया, मेरे में उतना नहीं आया. बट आई डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हमने प्रोसेस कॉन्सेप्ट लर्न किया है, और क्योंकि हम कोड नहीं लिखने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू राइट कोड फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, वी आर गोइंग टू यूज लाइब्रेरीज देयर. ओके, सो मैं बड़ा कर्सरी रूप से समझाऊंगा कि काम कैसे होता है और उसका कोड कैसे लिखते हैं. उसके बाद आप लोग कोडिंग पर आ जाइएगा. ठीक है, शुड वी स्टॉप? इट हैज बीन एन आवर और शुड आई कंटिन्यू? हमें क्या फर्क पड़ता है, आप जो करें. हम बैठे हैं, हम यही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे. क्या? टेक ए ब्रेक. लेट्स टेक ए ब्रेक. 15 मिनट के आसपास लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू. ओके, गुड. वेलकम बैक गाइस. So now we will see that our task is to classify. We'll first learn how can we classify between given objects, okay, or between given a series of things. So one of the decent algorithm is random forest, and random forest believes in the approach that rather than one straightforward system applying, it's not a neural network as such yet. If you're going to watch a match today, there are 12 of us, okay, or 11 of us. Each 11 of us will have a different opinion on the performance of a player. Right? So rather किसी एक का opinion लेने की जगह हम सारे 11 लोगों का opinion लें और उसके बाद majority pooling कर लें, और that will tell us. And I'm assuming कि all 11 of us are hockey experts. ठीक है, तो अगर 11 हॉकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये प्लेयर, और 11 में से 6 कह रहे हैं, तो there's a majority evidence कि that person is the good one. So that is the strategy used by random forest rather than having one approach. Okay, second year students, आप लोग ट्री पढ़े हैं अभी तक? ट्री. So you have done binary search tree and decision tree in your thing. Oh, good, then I don't have to teach decision tree. Okay? So the idea here is this, that you make classification trees, but rather than making one classification tree, you make many different classification trees, each randomly dealing with a different subset of data. Okay? सारे data so ये ना करें. Or each tree B is also looking at a different feature, and you use a bootstrap sample. So there are many ways of making multiple trees. One way says कि एक tree बनाए and the next tree influences the tree which have been made earlier. So in random forest, the idea is each tree is kinda randomly independent and not correlated with one another. Okay. And then to each tree you give a different sample on which it is going to learn its ability to classify. At the end of the day, you take all the classifications. So in our case, 1/3 of the training data was not even used for making the trees, but was used for out-of-bag error estimation and importance measurement कि ये feature important है या नहीं है.
So by an iterative process, random forest makes the various different classifiers. Now the reason why I'm taking a pause is I'm thinking how deep we go in. We have got an hour to cover 3 different ways. You know what? Let's go quickly. So random forest can be used for classification. You will have these slides so you can go back and but can also be used for regression, for identifying. It's not a very good regression, it's not a bad regression either. तो अगर हमें एग्जैक्ट यील्ड प्रेडिक्ट करना हो तो भी हम रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हैं. बट जब आप क्लासिफाई कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ट्री का हर का रिजल्ट क्या है, लेट्स टेक द मेजॉरिटी. जब आप रिग्रेस कर रहे हैं तो हर ट्री एक एक रिजल्ट देगा, तो ना मेजॉरिटी तो ले नहीं सकते. सो वी जनरली गो फॉर एन एवरेज ऑफ ऑल द पोल्स. सारे ट्रीज का अगर हम एवरेज ले लें, जैसे हम लोग अगर इंडिविजुअल रेटिंग करने लगे प्लेयर्स को, तो वी टेक द एवरेज रेटिंग ऑफ ऑल द प्लेयर्स एंड वी हैव गॉट a thing. Now there are some hyperparameters. आपने tree अगर आप लोग already deal कर चुके हैं, तो you can look at how deep the tree is. That could be a parameter in each individual element. How deep the tree? How many trees do we form? Depending upon the data, that will determine. So these are the parameters which you can tune, and we will see that shortly. और उसके बाद हम बूटस्ट्रैपिंग एग्रीगेट करते हैं, राइट. सो डेटा पॉइंट्स में हमने n इंडिपेंडेंट सब ट्रीज बनाए, एंड ईच डिसीजन ट्री को we will train on each subset. Each decision tree will be trained on its own subset of data, hoping that between different decision tree we have got smaller variance. So each tree works independently, and because it's independent, सबका काम एक साथ होगा, तो the polling will be fine. The other way to classify numbers is to look at k nearest neighbors, and this is a fairly old classification routine. बहुत अच्छी नहीं काम करते, but it's an easy routine to explain. But generally here, when application you take k to be typically the square root of the number of observations, और उतने आप ये देखिए कि हमारे उतने नेबर अगर हमारे पास हैं तो हमारा एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है. So you just look at how many people are near you, and that will determine कि आप किस ग्रुप में establish कर रहे हो. तो जैसे अगर हम इस रूम को k nearest neighbor में क्लासीफाई करें, तो I become as individual को मेरे पास कुछ नहीं है. These 4 become part of one group, those 5 or 6 become part of one group. So you just look at आपके पास कितने लोग हैं. Let's come back to it in a minute. Okay, let's come back to boosted general linearized model in a minute. Let's see हम implement कैसे करेंगे. So why don't we open our Python now and go through an implementation strategy. Okay. अभी हम yield data पर काम नहीं करेंगे, yield data पर शाम को करेंगे. Let's just try to go through individual stuff. So as usual, पहला काम क्या करेंगे? We'll import various libraries. तो 3 लाइब्रेरी जो हमें चाहिए होंगे टू वर्क विथ डेटा आर pandas and numpy, और pyplot यूज करेंगे फॉर एनी प्लॉटिंग जरूरत हो. तो लेट्स इंपोर्ट दैट थिंग. फर्स्ट स्टेप इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इजी. You read the file. I'm kind of hoping the data is in a CSV format, so data ये करेंगे, and किस फाइल को पढ़ा जाए. कल हम लोग का कोई डेटा मल्टी कॉलम डेटा नहीं था ना, कल जब हम लोग हैंडल कर रहे थे, we only had single column data. Okay, so go back to that web page. And let's download a data set. So you are there. Let's see किस डेटा के साथ प्ले किया जाए शुरू में.
You know what? Why don't we download the... Something went wrong. तो अगर आप sugar directory में हैं, then what you will find, there will be a data set called UCI-ccom.csv. Okay. So download the data and look at the data. How does it look like? Do you want me to read or उसको वापस screen पे डाल दूँ मैं? I will do that. I think that's the link. Do you get this file, uci-ccom.csv? Good. अब देखिए ये data set है कैसा. So what does it have? Can somebody tell me? Now this is not a data set on which we did the work, क्योंकि हम शाम को बताएंगे how complex our data set. I've taken a much simpler, still a yield prediction data set for semiconductor manufacturing. So if you look at the CSV file, what do you see there? कितने कॉलम्स कितने रोज का डेटा है? या आप किसी को नहीं मिल रहा है क्या ये? How many columns do you have? How many rows do you have? 1560, right? 1560 rows. How many columns do you have? You should have 590 columns. Okay? So we are saying that we have got 589 parameters. अगर आप लोग Excel में खोल रहे हैं, then it lists columns as A, B, C. मैं Mac use कर रहा हूँ, the numbers this way. I've got 589 different data coming from different things. Just have a look at this data. There are some data which is missing. Some data is in a different number system. There's zeros. Some of them have got many different numbers of fractions. Okay, there are tons of zeros, there are numbers of different type, and it's a huge data set. If you go back to the last column of your data set, that's a pass-fail kind number. So automatically it has already done to you, it's already giving you -1 for 1 for pass, -1 for fail, and so on and so forth. Okay, good.
सो ये हमारा डेटा सेट है, हम इसको यूज करेंगे. मैं पहले सोच रहा था कि टू गो विथ सम अदर डेटा सेट टू ट्रेन यू, बट लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द सेमीकंडक्टर डेटा सेट. तो इसको पढ़ा जाए. द थिंग विच इज इंटरेस्टिंग रिमेंबर इज इसका पहला कॉलम इज नॉट एन इंडेक्स. व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? इट्स अ टाइम स्टैम्प. तो वी हैव टू टेल DF, और जब खासकर जब हम पांडा रीड CSV करेंगे, वी हैव टू टेल दैट इट इज ए टाइम स्टैम्प डेटा. तो अगर आप लोग पिछला कोड लिखे थे, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक टाइम पार्सर मेथड था. तो वी हैव टू इंश्योर वी गिव द टाइम पार्सर मेथड टू पांडा रीड CSV टू इंश्योर कि, एंड वी हैव टू टेल कि इंडेक्स पहला कॉलम है एंड वी देयर कुड बी टाइम लाइक डेटा हियर. ओके, सो लेट्स रीड दैट फाइल. So parse dates, parse underscore dates should be true, and index column should be, which is the index column? Do we have a 0 column, or is a column called time here? The index is being called time. If you look at the name of the column, it's called time. So index column should become time. Don't forget the single quotes there. So file in double quotes, time in single quotes. Okay, so that's the first thing. We have read the file. All of you have read the file in your Python script. आप लोग क्या use कर रहे हैं? Are you using Colab or you're using on your sim? सबके सवाल सी हो गया, right? You don't want to be a reason for अगर कोई package missing हो तो install करने का मेहनत ना करना पड़े. That's the only reason you're using Colab, right? आप सबके पास मैंने Anaconda शुरू में करवाया था कि you have a Python running on your own machine. ठीक है. You can do a df.head just to check that file has been read properly. So run a df.head and see if मिला है सब कुछ. Now generally, now this is an optional statement right now. For this code we will not do it, but generally जब आप run कोई भी code लिखिएगा किन्हीं तरीके से, it might not be a bad idea to remove the not available, the NA columns. You can just do drop NA or remove a particular column. अगर एक few columns आपको जरूरत नहीं है तो मत है. मैं इसमें आपको drop NA नहीं करने को कहूँगा because virtually every row and column has some data missing. So let's not do that. Good, everyone is with me? कि कोई पीछे पड़ा है? पीछे पड़े हो तो अभी रोको मुझे, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. I'll come to your machine and explain. Okay? Should I come to you or you're okay? I'll come to you. Because फिर मुझे वापस आके आपको करना होगा, which is CAM.csv. फाइल रखे हो कहाँ पर? What's on your machine? Okay? Good. So everyone has been able to read the file? That side. आप लोग worried दिख रहे हैं. आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, आपके पीछे वाले बच्चे. हो गया? नहीं हुआ? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? 2 मिनट. हमारे यहाँ 2 मिनट्स में तो सब कुछ हो जाता है. I should still have a look. Note this. Oopsie, sorry.
So we'll give another minute to that group and then go on. So हमारा data size छोटा है पर उतना भी छोटा नहीं है, right? We have 1500 into 600 columns. We're talking about a decent number of data points here. You know what? Type कर ही देता हूँ. So guys, something like this. Those who are missing, ये वाला step सब लोग कर लिए हैं? Good. And this would be depending upon कहाँ आपका file saved है. Okay, which location you have saved. You might have to give the path location here. But semi-seco. और क्या डालेंगे इसमें? Parse underscore dates is equal to true. Index column is single quotes कहाँ है इस कंप्यूटर पे? That should do. Good. इस स्टेप को अभी नहीं करते हैं, but you can do it in a normal sequence क्योंकि हमारा डेटा बड़ा ही गड़बड़ी है. तो let's go. मैं पहला आपको बताऊंगा, but you will also be doing decision tree classifier as well as high gradient boosting classifier और almost सब में sequence of step यही होगा. Okay. Now, generally, this is another rule of course. इस वाले में हमारा advantage ये है कि pass or fail column is already numeric, right? It is having 1 and -1, so which is fine for us. Actually, you know what? Let's check कितने हैं pass or fail column वाले. So let's do.